Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. I hope I'm clearly audible and visible to all of you, right? So, everyone, please quickly join in so we can start our today's discussion, right? So, today, guys, we are going to practice question based on Module D and Module E, which is your additional study material, right? So we will practice both the units, both the modules in this particular session, and from tomorrow onwards, we will have marathon classes based on all the four modules, right? तो कल हम लोग आपका मिक्स क्वेश्चन करेंगे कल और परसों, ठीक है, काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट एंड वी विल प्रैक्टिस मैक्सिमम एरियाज एंड with the help of those particular one. So I hope you will be able to score very good in your upcoming examination, right? तो सबसे पहले आपका बता दीजिए कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट्स के थ्रू लिख के बता दें सब कुछ सही है मेरी तरफ से, ऑडियो एंड वीडियो। तो हम लोग आपका सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली देयर वाज सम स्ट्रीमिंग इश्यूज फ्रॉम पास्ट 2 days, so that's why I provided a recorded session for module C. आई होप मॉड्यूल सी सबने देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो यू कैन एक्सपेक्ट एंड एटलीस्ट 20 to 22 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी। हमने काफ़ी डिटेल में भी वो डिस्कशन भी किया है एंड पीडीएफ इज ऑलरेडी शेयर्ड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पे एक्सेस करके आप लोग किसी भी बैच में चले जाइए। हर एक बैच में हमने वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट किया है सबके लिए, ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई चैलेंज आ रहा है पीडीएफ डाउनलोड करने में, सो यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आई विल रीसेंड दोस वन, राइट। चलो, सो शेल वी स्टार्ट देन गाइस, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो गाइस आज हमारा जो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज अराउंड मॉड्यूल डी, which is wealth management. Last year there was number of question based on this particular module, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर थे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इस साल भी आपका इस बार भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे, ठीक है। एंड आई विल बैट ऑन मॉड्यूल सी, ठीक है, मॉड्यूल सी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार, ठीक है। बी एंड सी दैट विल बिकम गेम चेंजर बिकॉज बी इज वेरी लेंदी एंड सी आपका मार्केटिंग जो प्रोस्पेक्ट है वो है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी मॉड्यूल सी, वेल्थ मैनेजमेंट, investment management, tax planning and other financial services provided by bank like mutual fund, insurance and others which are generally part of our cross selling, okay। चलो, तो without any further delay we will start our today's discussion। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आपके, प्यारे एक्सप्लेनेशंस आपके लिए, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कुछ हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोग with the help of PDF you can go through those particular one। बहुत अच्छे से उनको पढ़िएगा, believe me that is definitely going to help you in your upcoming examination, ठीक है। So unit wise आपका स्टार्ट करते हैं। Today I did not keep those आपका मैकमिलन वाला क्वेश्चन, रीजन बीइंग कि दिशा मैम ने ऑलरेडी वो कवर किया कर लिए हैं, ठीक है। सो मैंने आज वीडियो देखा था मैम का, तो उसमें ऑलरेडी वो सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो आप वहां से उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सो विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास मैक्सिमम वो होगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका विद टैक्सेशन क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, हाउ कैन बी द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया क्लासिफाइड। बताओ क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, so the question is generally based on tax structure in India. So it is further classified among which part and how many parts in others. तो क्या होगा करेक्ट आंसर। वन इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, taxes that are levied directly on taxpayers cannot be transferred to others, ठीक है। So taxpayers means आपका individuals, जैसे इनकम टैक्स, आपका फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और apart from these gift tax, so these all are generally part of the direct tax and we cannot transfer this particular liability to someone else, ठीक है। तो अगर हमने इनकम जनरेट किया तो हमें ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, देयर बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू थर्ड पार्टी, ठीक है। सो टैक्सेस इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टैक्सपेयर्स, ठीक है, which pass on to others and others is basically consumer, ठीक है, the real consumer of that particular product, ठीक है। So goods and service tax GST has replaced several direct no. So this is direct taxes in all team. So what will be your correct answer? 1 and 2 will be right answer for this particular one. Okay, so option A. So we have only two
सी किसने लिखा है ये, ठीक है, सी ऑल 1 2 3 हाउ सी गाइस, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, जीएसटी हैज रिप्लेस सेवरल डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इज ऑलवेज अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, like we have only two type of structure in the country, one is direct and another one is indirect. Indirect, like most of indirect taxes are basically clubbed in your GST, one nation one tax, ठीक है. तो सी नहीं होगा किसी भी एंगल में, सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम, दिस वाज द करेक्ट. अगर ये इनडायरेक्ट होता तब हम लोग इसकी तरफ जाते. सो ओनली 1 and 2 will be right answer for this particular one. Understood? Swarna and who else is there, ठीक है, Nethwani, I hope you got this particular one, ठीक है. So we have like tax structure where like broadly categorized in two major categories. One is direct tax, ठीक है, and another direct tax where we have income tax, corporation tax and others, ठीक है. Indirect taxes, so indirect taxes, these are tax levied on the goods and services covered by the business, and they can be passed on to the end users, basically it is consumer, ठीक है. So GST is a form of indirect tax. Understood? This is clear, I guess, right? Master, very very good evening. And okay, चलो next question. Which of the following statement is correct, ठीक है. So इनमें से कौन सा statement correct है? And question is generally based on assessment year and financial year. बहुत ही basic question है, starting में कुछ question बहुत basic है, ठीक है. So what will be your correct answer? The financial year refers to the year in which income is earned, while the assessment year is the year in which income is assessed or for tax purpose, and taxes are paid and return filed. Financial year is typically denoted as FY and SAI. Again, since the financial year is the year preceding the assessment year, it is sometimes referred to as previous year for the income tax purpose. So what will be your correct answer for this particular one? 2 का C आपका होगा, ठीक है. All 1 2 3 आपका people are saying, ठीक है. Yes, all 1 2 3 बिल्कुल सही, ठीक है. So financial year, basically whenever we talk about the financial year, like current financial year is, अभी हमारा क्या चल रहा है 2024-25, ठीक है. सो द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ठीक है, ये आपका टाइम है जहां पे हम इनकम अर्न करें. So once this financial year will get completed, 31st March 2025, so then we have to file the taxes. So when you'll go through or log in your income tax department with the help of your PAN number, so you'll select ITR1. Then after selecting ITR1, then first they'll ask you to select the assessment year. Assessment year is basically in which year this income is got assessed, right? So assessment year for this financial year will be 2025-26 आपका, ठीक है. So very simple one, and everybody mark the correct one for this one. So financial year, assessment year, and this is example also, right? So you can go through these particular thing. If you are facing any difficulty, please do mention into the comment section, okay? So there is a question, if a business is set up after January of 1st January, then the financial year will be following year. See, businesses, they also have to follow the same things, but that rule is, earlier we have to used to follow that calendar year period, okay? So nowadays we generally shifted to the this financial year itself, so again it will be counted as financial year, ठीक है. तो वो आपका जो basic में आपका जो रहेगा, ठीक है. So I'll check this particular point, master. If there is such rule, so I'll definitely clarify that particular one. For qualifying as a resident of India, as per income tax guidelines, the individual has to satisfy, ठीक है. तो कब हम इंडिया के आपका रेजिडेंट कहलाएंगे with reference to taxes things, ठीक है. So what will be your correct answer? Stay in India for a period for a year of 182 days or more. Stay in India for immediately preceding 365 days or more than 60 or more days in the relevant financial year, right? Has stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years आपका, ठीक है. So which statement is correct? Suvarna is saying 1 and 3. 1 and 3, okay. No, I'll go with 1 and 2 आपका, ठीक है. So 1 and 2 should be right answer for this one, ठीक है. Stay in India for immediately preceding years for 365 days or 60 days or more in the relevant financial year, ठीक है. So 1 and 2 should be right answer for this one, ठीक है. 1 and 2.
Okay, so I'll go with option A itself. Okay. So 1 and 2 will be right answer for this one. 4 years in preceding financial years, 4 financial year, then you'll apply that rule. Okay. So to qualify a resident of India under the Income Tax Act, an individual must satisfy 182 days or more during the relevant financial year और द करंट फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए भी हम लोग बात करें, ठीक है. स्टे इन इंडिया फॉर 365 days or more in preceding 4 years, ठीक है, and 60 days more in this. So preceding 4 years, let's say if we are talking about financial year 2024-25, so preceding 4 years are basically 2023-24, ठीक है. Then आपका 22-23, देन आपका 21-22 एंड 2021, ठीक है. सो दिस इज द वन जो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है. सो अमेंडमेंट्स आपका इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021. As per the recent amendments, an Indian citizen who is not liable to pay taxes in any other country will be considered a resident of India if the total income excluding foreign sources is 15 lakh. First thing, there is no tax liability in the other country or territory due to the individual domicile, residence or any similar criteria. This new provision is aimed at taxing Indian citizens who may consider non-resident for tax purpose in other countries but have significant income. So this definition is as per FEMA Act. Okay? So FEMA Act, Income Tax Act. This is basically resident and non-resident. They are generally categorized based on two acts. One is FEMA. Another one is taxation. For taxation purpose, we have Income Tax Act, right? So this is the one जो will be considered as a person. हाँ, थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट होगा ना, so please like you just have to refresh, ठीक है. I guess there is some internet issues from my side. Right, now it is fine. Now it is fine, right? So what will be your correct answer in this particular case? आपका individual, HUF, company, firm, so all will be right answer for this particular one. So C will be right answer for this one, okay? So a person means as per section 2 subsection 31 of Companies Income Tax Act 1961, a person who would be anyone जैसे आपका ये, ठीक है, individual, HUF, company, firm, association of person or body of individual, a local authority, every artificial or judicial person who is not included in any of the above mentioned categories. Okay, so this is as per section 2 subsection 31. Next one, guys. Which of the following statement about 10 is are करेक्ट, ठीक है. तो अभी इसको हम जीएसटीएन के नाम से जानते हैं, ठीक है. सो जीएसटीएन के नाम से इसको यूजुअली हम लोग लेते हैं, बट इट इज ऑल लाइक अर्लियर इट इज कॉल्ड 10, ठीक है. 10 नंबर्स आपका जो कंपनीज के लिए होता है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिविजुअल के लिए 10 होता है, वैसे कंपनीज के लिए आपका फॉर दिस वन. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, आई डोंट नो व्हाई दिस इंटरनेट इज गेटिंग लिटिल बिट फ्लक्चुएशन इन इंटरनेट, ठीक है. तो अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का है, ठीक है, ये अगर थोड़ा सा होता है, सो जस्ट रिफ्रेश दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो क्या होगा गाइस, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. सो दिस इज ट्रू, दिस इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है. So this correct, we have to find out the correct one. 10 is allotted to those, so in this particular situation this is correct, right? So I'll go with option B only, right? So what is your answer? Try, ठीक है, थोड़ा बहुत try भी करो, ठीक है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं यार. चलो, so 10 tax deduction and collection account number, it is a 10-digit alphanumeric numbers tax department to individuals, to individual entities responsible for deducting. That means we need to correct our answer for this particular one, ठीक है. So option C, then we have to go with option C only, ठीक है. Explain, we have to change this particular one. It is अच्छा, okay, ठीक है. So I'll correct this particular one, guys, sorry, ठीक है. So we have to correct this particular one because as per this explanation this goes to this, ठीक है. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपका गड़बड़ हुआ है, ठीक है. PAN stand for permanent account number. It is unique 10-digit alphanumeric identification number issued by Income Tax Department. PAN serve as universal identification number for individuals. This and others. आपका ठीक है. Yes. Next one, guys. For collecting TDS as well, right?
which of the following statement about income from house property or rental income is correct? ठीक है, so income from house property and rental income is correct, so you have to find out the correct statement about this one. ठीक है, so rental income from properties other than those occupied by the owners is included. If property is unoccupied, notional income is calculated and included. Section 15 of Income Tax Act cover income from rent. बताओ क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? आप लोगों ने अगर फाउंडेशन वीडियोस देखे थे, so these two statements are correct. This is incorrect. It should be, as per my knowledge, it should be section 18 आपका. ठीक है, so section 18 of Income Tax Act 1961 covers the income from rent आपका, right? So what will be your correct answer? अच्छा, ओके, हाँ, जैसे मास्टर ने भी आपका सेम चीज लिखा है, so I'll go with option C itself. ठीक है, so rental income from properties other than those occupied by the owners or unoccupied notional income is calculated. Section 18 of the Income Tax Act define the annual value of property and cover exemption from properties used for business and profession as well. ठीक है, so please do take care about this one. ठीक है, so ध्यान रखिएगा इसका और रिवाइज कीजिएगा. So in revision also this is definitely going to help you. Next one, which of the following statement about capital gain is are correct? ठीक है, सो कैपिटल गेन के जो फंडामेंटल्स हैं उनसे रिलेटेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस. ठीक है, याद रखें इसको. Capital gain included long-term capital gain and short-term capital gain from sale of various assets. Section 45 of Income Tax Act 1961 cover the taxation of profit or gain arising from transfer of capital assets. ठीक है, so both are true, right? So what will be your correct answer for this one in this situation or in this based on these two statements? ठीक है, so both the statements are correct. ठीक है, so we will go through this one. So income from capital gain included both long term and short term. ठीक है, so ये जो long term और short term का definition है ना, like less than 12 months और आपका less than 24 months और in some cases less than 36 months. ठीक है, सो वो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको क्लियरिटी आपका रखना होगा. सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, प्रॉफिट और गेन राइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन टैक्स प्रोविजंस. ठीक है, दिस अप्लाइज टू बोथ सेल ऑफ फिजिकल एसेट such as property or stock and other capital asset. ठीक है, additionally money or assets received by the SSC taxpayers from the insurer during the previous years due to incident like flood, typhoon, hurricanes, earthquakes and this are also part of this particular one. ठीक है, so section 45, please do take care about these things. ठीक है, very important one and this will help you out in your upcoming examination. ठीक है, section 18 for rental income, 45 for capital gain. हाँ बिल्कुल सर. ठीक है, next one, which of the following statement are correct regarding section 80C? बहुत ही आसान होगा फिर तो. deduction on investment for tax planning. ठीक है, so 80C आपका सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है टैक्स पेयर्स के बीच में. ठीक है, so provident funds PPF, you can make a maximum contribution of 1.5 lakh per year in this tax saving scheme with a lock-in period of 10 years without penalty. True. Tax saving mutual funds आपका, these funds allow exemptions up to 1.5 lakh per annum under section 80C. ELS जिसमें आता है, ठीक है, equity linked saving schemes are popular instruments under this particular one. True. National saving certificate, this instrument can be used to earn tax saving interest up to 1.5 lakh under 80C. ठीक है, this statement is wrong. ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है समझ में आया आपको? What is the wrong in this particular case? Like lock-in period is 10 years. Usually PPF account is for 15 years. ठीक है, but like before 10 years, if you'll premature that particular one, so that is the one. ठीक है, like after reaching 10 years you can withdraw money from that particular one. ठीक है, in general maturity is 15 years, but if you withdraw money before 10 years, so there will be some penalties and all. ठीक है, that is the meaning of this statement and this is true, right? So now what will be your correct answer? Rohit sir is saying option 1 and 2. like what is the error in this particular statement? Error is again this limit. ठीक है, so this limit is again
1.50 lakh, ठीक है. So what will be your answer? Both 1 and 2, ठीक है. Only 1 and 2 will be right answer for this particular question, okay. And the only things in this particular case, it will be the one, right. PPF lock-in period is 10 years. Do check this particular thing, ठीक है. The overall maturity is 15 years, but people, they can access that particular account or they can withdraw money from that particular one 10 years, ठीक है, as per my knowledge. So please, Galot sir and others, do check this particular thing, and even I'll also check that particular one, ठीक है. So yes, हाँ. So deductions under Income Tax Act 1961 Section 80C, the like सबसे ज़्यादा favorite आपका रहता है. Overall limit of this particular section is 1.5 lakh annually, ठीक है. So public provident funds, a government-backed schemes that offer this particular one. So ULIP is also part of this. Tax saving FD, employee provident funds आपका EPF, and national saving certificates, and post office टैक्स सेविंग स्कीम. सो या तो हम लोग आपका कॉम्बिनेशन में आपका 1.5 लाख कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से किसी एक भी सेविंग स्कीम में आपका 1.5 लाख रुपीस तक का जो अमाउंट है दैट कैन बी सेव्ड आपका, ठीक है. सो दैट इज द वन, करेक्ट है, ठीक है. तो प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो. Which of the following statement are not correct regarding the Sukanya Samriddhi Yojana? So the scheme is about the Sukanya Samriddhi Yojana. So Sukanya Samriddhi Yojana is a government saving scheme aimed at benefiting a girl child who is 10 year old or younger. बिल्कुल सही है आपका, ठीक है. So first statement is true. A parent or guardian can open a maximum 3 accounts. The principal amount qualify for deductions, and the interest is tax free in this particular case. The account mature after 21 years of the investment or upon the marriage of girl child. So what will be your correct answer? This is also correct here. So the only statement is incorrect in this particular case is this. Why this is incorrect? There is as such no limitations, ठीक है. तो पेरेंट्स के ऊपर ऐसे कोई भी ऐसे limitations आपका इस केस में नहीं है, ठीक है. So option A will be right answer for this particular one. Only 2 will be correct answer. So Sukanya Samriddhi Yojana is a government-backed saving schemes designed to benefit the girl child. It is available for girls aged 10 years or younger. A parent or guardian can open up to 2 accounts. Achha, okay. If you talk about the scheme oriented, so this is the one. If this statement is scheme oriented, so we have 2 accounts. Achha, I related that particular one with reference to the journal accounts. जैसे हम लोग open करते हैं ना saving accounts and all. With related to scheme, it is 2 accounts. Very good. Who mentioned this? Master sir is mentioned correct that particular one. So a parent or guardian can open up to 2 accounts. Please do remember this. Under this particular scheme, one for each daughters, means आपका 2 daughters के लिए applicable होगा. The principal amount invested in a scheme qualify for tax deduction. The interest earned on the deposited amount is tax free. The amount mature after 21 years from the date of opening or upon the marriage of the girl child, whichever come first आपका, ठीक है. चलो बहुत बढ़िया गाइस, नाइस. नेक्स्ट वन गाइस, यू कैन ऑल्सो राइट. मास्टर्स ने बिल्कुल आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था उसका, एंड आई टुक अ रॉन्ग रेफरेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, PMVVY. So PMVVY is a pension scheme for senior citizen aged 55 years. It offers an assured interest rate of 8.3%. So do not get confused about this. Okay, this is true. The lock-in period is 10 years. This is also true. The principal amount qualify for deduction under section 80C, and the interest is tax-free. This is also true. So now, like, statement 1 is incorrect here. So statement 1 आपका incorrect है. It should be आपका age 60 और 60 plus आपका ना. So senior citizen आपका है तो 60 year and more आपका, that will be the right answer. तो हमें क्या ढूंढना था? आपका correct option. So आपका option A will be right answer. 2, 3 and 4 आपका, right? Very good. Next one. And you can correct me guys, like if I go wrong in any area. So I am also trying this subject for the first time.
एंड आई ट्राई माई बेस्ट, जो भी बेस्ट कंटेंट आपका हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जामिनेशंस के साथ लास्ट ईयर्स में, तो वो उसको मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। तो इफ आई गोज रॉन्ग इन सम एरियाज प्लीज डू करेक्ट मी, ठीक है। सो वहां पे जरूर बताइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ELSS? सो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आपका, ठीक है। सो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, एंड ये स्कीम जनरली ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा फेलियर इसको मिला था। रीजन लाइक व्हाट वी जनरली डू, आपका जो पैसा आता है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जो कंडीशन चलता है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एंड अदर्स, तो वहां से जो रिटर्न आपका होगा वो, ठीक है। सो ELSS refer to specific equity mutual fund designated for the purpose of tax savings. Investment in specific ELSS scheme allow a deduction of 1.5 lakh under section 80C. ELSS has a lock-in period of 3 years. ठीक है, तो क्या होगा, सारे ही सही होने चाहिए आपका, all are correct in this particular case. Very good guys, awesome. Next one, which of the following statement are correct regarding employee employee contribution under section 80CCD, ठीक है, और सबसेक्शन 1 80CCD सबसेक्शन 1, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें हो सकता है? द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ इज द least of the following: 10% of salary in case of employee, 10% of total income in case of self person, 1.5 lakh rupees limit allowed under section 80C 80 मतलब this is obviously true, ठीक है। Action section 80CCD subsection 1B, an additional deduction of 50,000 is available for amount into the NPS, ठीक है, National Pension Schemes, ठीक है, true. Contribution to Atal Pension Yojana also eligible for deduction under this particular section, ठीक है। तो ये सारे ही statements आपका correct है। I'll go with option B, ठीक है। So option B, and please do remember these particular one, हाँ, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में भी रखिएगा आपका, ठीक है। I'll share this PDF. Please do revise these particular one. Which of the following statement is correct about short-term capital gain? So correct statement about the short-term capital gain. तो short-term capital gain का जितना आप देख सकते हैं, it is about the timing things in all. An asset held for a period of 36 months or less is termed as short-term capital gain. In case of immovable properties, देखो condition specifically mention किया गया है. The applicable period considering short-term capital gain is 24 months. There are certain assets where the applicable holding period of short-term capital gain is 12 months and less. तो क्या होगा आपका correct answer इसके लिए, ठीक है? What will be your correct answer? Taxpayer can not, and अच्छा okay, master sir is saying कि taxpayer Atal Pension Yojana, fifth statement is wrong. Contribution to Atal Pension Yojana are also eligible for the deduction under this section. Okay, so sir, I'll just take a screenshot of this and I'll check this one. हाँ, master sir, I'll reply on group also. ठीक है, I'll check this one. चलो, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इन दिस केस आपका जैसे जो मूवेबल एसेट्स हैं उनका, इफ यू होल्ड मोर देन 36 मंथ्स, so that will be considered as hold more than 36 months and you sell that particular asset long term, 36 से नीचे आपका short term. In case of immovable property like land and all, so in case the short term capital gain will be less than 24 months and more than 24 months long term capital gain, ठीक है। In case of like shares, bonds, mutual funds and all these kind of things, mutual fund, shares, investment and all, so they generally comes under this particular one, ठीक है। अच्छा, राइट है, ठीक है, हाँ। सो फिफ्थ वन इज राइट, यू आर सेइंग, ठीक है, ओके ओके, हाँ, आई आल्सो डू द क्रॉस चेक थिंग्स, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो, ठीक है। सो which of the following statement correct about long term capital gain? So now it is about the long term capital gain, ठीक है। So capital assets such as land, building and house property will be considered long term capital assets if held 24 months and more, ठीक है। Similarly, equity and preference shares, securities, unit of UTI or equity oriented mutual funds and zero coupon bonds will be considered long term assets held for more than 12 months, ठीक है। So what will be your correct answer? Both these statements are true, ठीक है। So again, what will be your correct answer for this one? Only 1 and 2 means we have only 2, हाँ, so you can mark A or B anything, ठीक है। So all the statements, we have only 2 statements and both the statements are correct in this particular situation. Next one,
मैच द करेक्ट वन, ठीक है। तो बताओ आपका, यू हैव टू मैच दीज थ्री सेक्शन, सेक्शन 54, सेक्शन 45F एंड आपका सेक्शन 44 EC, ठीक है। So exemption on capital gain on sale of assets other than house property, ये किस में आता है आपका फर्स्ट वाला, इट कम्स अंडर 54F के अंदर, ठीक है। सो 54F आपका, ठीक है। दूसरा एग्जम्पशन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एग्जम्पशन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, री-इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स, ठीक है, री-इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स, ठीक है। So it should be no specific bonds. हाँ, so like sorry, my bad guys. It should be आपका 54F, ठीक है। It should be 54F, ठीक है। Exemption exemptions, हाँ, it will be आपका EF sorry EC आपका, ठीक है। It is EC होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि I'm sure about this, ठीक है। So this will be आपका section 54, ठीक है। So it will be आपका section 54, ठीक है। So आपका पहले का तीसरा मीन्स आपका क्या हो रहा है, हमारा सीक्वेंस क्या बैठ रहा है, आप लोगों ने आंसर किया किसी ने, ठीक है। बाइंग विद इन 6 months, ठीक है। सो एग्जामिशन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ अनदर हाउस, हाँ दिस इज द ट्रू वन, ठीक है। सो फर्स्ट का आपका है, फर्स्ट का है हमारा थर्ड, ठीक है। फर्स्ट का इज थर्ड, नहीं हमने कुछ गड़बड़ किया क्या फिर से? ओके, एनीवन हु विश टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फर्स्ट का exemption on capital gains on sale, okay, I have to check this particular one, हाँ अच्छा फर्स्ट का थर्ड है इसमें, तो हमारा फर्स्ट का थर्ड ही था क्या? ओके, एंड बी का इज वन, ठीक है, ATF, अच्छा ओके, इन दोनों में हम लोगों ने गड़बड़ किया, ठीक है। सो इट इज आपका बी का वन एंड अदर्स, ठीक है। सो विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, सो प्लीज गो थ्रू दिस वन इन डिटेल। हाँ, सेक्शन 54 ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये कंफ्यूज करेंगे आपको भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। एटलीस्ट मतलब 9 तारीख तक याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। So you do not have to remember these particular thing lifetime, just at least for like till your examination. So exemption on sale of house property on purchase of another house property, long term capital gain is exempted in case of sale of house property by investing in up to 2 house properties against earlier provision of 1 house property with a same condition. Section 54F आपका exemption on capital gain on sale of any other asset, a house property. The above section is available when there are capital gain from the sale of a long-term assets other than a house property. The entire sale consideration be invested and not only capital gain to buy a new residential house property to claim this exemptions. 80 EC exemption on sale of house property on reinvesting a specific bond exemptions is available under 80 EC when a capital gain from the sale of other first property are reinvested into a specific bond up to 50 lakhs. The money invested in the money invested can be redeemed after 5 years, but they cannot be sold before the lapse of 5 years from the date of sale, ठीक है। So these particular conditions are again very important one, ठीक है। So थोड़ा सा इनको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, so ये आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट वन इज वेरी बेसिक वन, ठीक है। सो चलो बताओ क्या होगा आंसर। So what will be your correct answer guys? हाँ, सो सर लाइक आई शेयर दिस PDF, ठीक है, प्लीज गो थ्रू दीज पर्टिकुलर थिंग्स, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, मतलब बिफोर एंटरिंग इन टू योर एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो, ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक है उनके थ्रू आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो अंडर द न्यू टैक्स रेजिम व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल विद एन एनुअल इनकम बिटवीन 3 to 7 लाख, ठीक है। तो कितना है आपका 5%। आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वन, ये हमने आपका डिस्कस भी किया था ना, कहाँ पे आपका AFM के पेपर में या कहीं तो हमने डिस्कस किया था ना। सो व्हाट इज आवर न्यू टैक्स रेजिम एज पर यूनियन बजट? सो इट इज लाइक 0 to 3 लाख आपका, ठीक है, 0 to 3 लाख नील, ठीक है। देन आपका 3 लाख to 7 लाख, ठीक है, इट इज आपका एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। देन वी हैव 7 लाख to
10 lakh आपका at the rate of 10%, ठीक है. Then we have 10 lakh to 12 lakh at the rate of how much? 15%. And then 12 lakh to 15 lakh at the rate of 20%. And more than 15 lakhs आपका एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो कई बार वो आपका बजट में आपको ऐसे क्वेश्चन, व्हाई 10%, ठीक है. एवरीबॉडी इज मेंशनिंग 10 क्वेश्चन. नो, नॉट 10% गाइस, ठीक है. दिस इज आवर न्यू टैक्स रेजिम. दिस इज ट्रू ना, आप लोगों ने देखा होगा न्यू टैक्स रेजिम आपका देखा होगा. बी, एवरीबॉडी इज सेइंग बी. व्हाई बी गाइस? अच्छा, थोड़ा आंसर मेरे को लेट तो नहीं मिल रहा है. नो, आई एम गेटिंग ऑन टाइम, ठीक है. सो लाइक दिस इज द न्यू वन गाइस. आप मेरे को भी थोड़ा सा हो जाएगा. लाइक दिस इज, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है. सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है. सो अभी का जो आपका यूनियन बजट 24-25 जो जुलाई में आपका पोस्ट ही आपका इलेक्शन जो प्रेजेंट किया गया था, सो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है या स्ट्रक्चर के ऊपर जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उन पे भी आपको दे सकता है, ठीक है गाइस. एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर वन? चलो आगे बढ़ते हैं. देन what is the purpose of TDS, tax deduction at source? So TDS is generally known as an advanced form of taxes, ठीक है. So basically through TDS it is like the source, जैसे हमारे लिए source हमारा बैंक है जहां से हमें सैलरी मिल रहा है, तो दे जनरली चार्ज टैक्सेस इन एडवांस एंड दे डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट मींस आईटी डिपार्टमेंट्स, ठीक है. तो इस तरीके से आपका जो इसका प्रोसीजर चलेगा, ठीक है. द पर्पस ऑफ टीडीएस इज कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम. बिल्कुल सही है, ठीक है. TDS is deducted by the payer at the specific rate and deposited with government, which can be claimed as tax credit by the deductive if their liability is less than the tax paid, ठीक है. So both the statements are correct in this particular reference, right? So TDS is a form of advance tax, ठीक है. जैसा हमारे उसमें से होता है ना, let's say your overall tax liability for the year 24-25 is 1,20,000. So what your bank will do, suppose that if you do not have any kind of investment in all deductions, okay, so they'll divide 1,25,000 by 12 and they'll start deducting that amount from your salary, ठीक है. तो उसमें से वो आपका करके and they'll deduct, like source is bank, so they'll give you salary after deduction of TDS and they'll deposit it with government. Then central आपका TDS, that income tax department, ठीक है. Then what they'll receive the TDS certificate and they'll pass on to you. Form 16A जिसको हम लोग बोलते हैं. And with the help of ITR, if your tax liability is less than tax deposited, so you can claim that particular amount, ठीक है. So that is the basic sequence. What is the threshold limit for monetary gift received by an individual beyond which it charge on to taxes, ठीक है. अगर आपको कोई apart from that family relation, blood relation आपका, ठीक है. So suppose that if you receive a gift amounting dash, so that will be taxable. तो कौन सा amount आपका है? So कितना है इसका threshold? Anyone? So it is, what will be your correct answer for this one? Anyone who know about this? It is, हाँ बिल्कुल सही मास्टर, it is 50,000. ओके. सो अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है जिसकी वैल्यू कितनी है 50,000 या 50,000 से ऊपर है, सो दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है. सो वो आपका क्या होगा? टैक्सेबल होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली रिलेशन और ब्लड रिलेशन, ठीक है, जहां पे ये काउंट होगा. सो टैक्सेशन ऑन गिफ्ट रिसीव विदाउट कंसिडरेशन. If any annual individual receive any sum of money without consideration as a monetary gift in the form of cash, check, draft, this, it will be subject to taxation, ठीक है. The sum of money is received without any consideration, or the aggregate value of the money received during the financial year is 50,000. If both these conditions are met, the total amount of money received will be charged to tax and income under the head of income from other sources. Please do remember this one also, ठीक है. So we have how many sources of income? We have 5 sources of income, ठीक है. जो इनकम हेड आपके होते हैं वो, सो वी हैव 5 सोर्सेज ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम, बेसिकली प्रॉपर्टीज इन ऑल, ठीक है. देन वी हैव इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड द फाइनल वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है. तो ये आपका इसके तहत काउंट होगा. हाँ, इफ यू विल गेट आपका 49,999, सो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है. तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा. बिल्कुल सही. चलो, which of the following statement is correct regarding sovereign gold bonds, ठीक है.
वेरी लेस चांसेस, ठीक है, क्वेश्चन इनको इनके ऊपर पूछने का। लाइक लास्ट ईयर देयर वाज नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले 2 सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट दे रोल बैक दिस स्कीम, ठीक है, उन्होंने इस स्कीम को खत्म कर दिया है, ठीक है। एंड I hope you guys are I hope you guys know about this thing. Na? During the budget, they generally reduce the custom duty on the government. They generally reduce custom duty on gold. ठीक है, जो import duty होती है आपका, तो जिससे क्योंकि पेमेंट करना था तो उन्होंने रिड्यूस किया, तो गोल्ड का प्राइसेस एकदम से नीचे आ गया था, ठीक है। एंड दे रोल बैक दिस स्कीम, नाउ दिस स्कीम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो बैंकर आर ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है, सही है। So as sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold, yes 1 ग्राम के हिसाब से चलता है, offered at alternative to physical golds, true, पहला बिल्कुल सही है। आपका फिक्स रेट, आपका जो गोल्ड प्राइस है प्लस उसके ऊपर आपका 2.5%। एलिजिबल इन्वेस्टर्स इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड ट्रस्ट एंड आर मोर्स, दे कैन इन्वेस्ट इन दिस वन, ठीक है। तो क्या होगा आपका all, I'll go with option A, all will be right answer for this particular one, ठीक है। So sovereign gold bonds are government backed securities that are denominated in grams of golds. They provide a opportunity for individual to invest in gold without having physically buy and store it, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो फिजिकल सर्कुलेशन था उसको कम करना, और बाकी बैकग्राउंड गेम आप लोग जानते हैं। The key feature of sovereign gold bonds include this 2.5 1 ग्राम, और उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है, 4 kg for individual, the limit is 4 kg per individual, 4 kg HUF आपका, 20 kg for trust in a financial year, ठीक है। तो ये सारे financial year का लिमिट्स आपकी हैं, ठीक है। Sovereign gold bonds offer a secure and efficient way to invest in gold while also earning interest on the investment, making them a popular choice for long-term wealth creation. Understood? So please go through this one. अगर वो question पूछेगा भाई, so this slide will definitely going to help you. Next one. Factoring services provided by bank involve, बताओ क्या होगा correct answer? So factoring services आपका, it is basically factoring, forfeiting. These are I and IFS में हमने पढ़े थे, हमने AFM में पढ़े थे. So it is part of discounting bills, ठीक है. So it is a case of discounting bills, ठीक है. तो जहाँ पे basically seller they generally upload their bills, okay. All basically in case of factoring they generally एक आपका जो बैंक है एज अ फैक्टर जिसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एंड दे नीड फॉर वर्किंग कैपिटल मनी, ठीक है। इन केस ऑफ फैक्टरिंग इट इज बेसिकली डिस्काउंटेड अराउंड 80 to 85%, forfeiting it is a 100%. Factoring is always on an open account basis and all, right? Next one. In the context of depository services, what does dematerialization means? डीमेटरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने. सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. डीमेटरलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है. सो कन्वर्टिंग फिजिकल एसेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक वन. सो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दैट share certificate, bond certificate and all. So nowadays these all are generally part of your electronic form. So that is also known as demat form, ठीक है. So conversion of physical security into electronic form, A only will be right answer for this one. Next one. Which act primarily regulate the factoring business in India? तो जो फैक्टरिंग का बिजनेस है वो कौन से एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है. सो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 इटसेल्फ will be right answer for this particular question, ठीक है. आसान है. Which of the following is not an example of alternative assets, ठीक है. So alternative assets, ठीक है, दो तरीके से, एक आपका कोर प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के, और दूसरा आपका अल्टरनेटिव. लाइक जैसे अगर आप मेरे से रेफरेंस मांगेंगे तो लेट्स से आपका कोर प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इज लाइक इंश्योरेंस, सेव, आपका शेयर्स एंड अदर्स, ठीक है. दीज आर द कोर प्रोडक्ट. Alternative is basically I purchase of machinery, I purchase some gold in physical, I purchase some silver or other these kind of things. कोई एंटीक मैंने परचेज करके रख लिया, ठीक है, तो that is alternative source आपका, ठीक है. So in this particular case not an example of alternative source. So what will be your correct answer? Mutual funds will be right answer for this particular one. Very good guys. Next one. So mutual funds, these are typically considered as traditional asset because they involve investment in diversified portfolios. Alternative asset refer to a non-traditional or tangible investment
which can include items such as art, antiques, precious metals, fine wines, and other physical assets that are not usually included in a standard investment portfolio, right? So while mutual funds आपका जो हम लोग जानते हैं. Next one. Kamal has recently inherited a large sum of money from his grandfather. He is uncertain about how to manage this wealth. What is the best course of action for Kamal? बताइए जी, कमल को क्या बोलेंगे आप लोग, ठीक है? So कमल आपका मतलब टाटा की फैमिली से बहुत पैसा मिला है इसको, ठीक है? So अब यहाँ पे जो है ये जो पैसा इतना आया है, कहाँ इसको रखा जाए? क्या हमारा होना चाहिए? Spend it all on lavish vacation, ठीक है? Invest in high risk, seek advice from the wealth. So will suggest the option C, very basic one. Okay. Next one, guys. So next one, what is the primary objective of mutual funds? To provide a basket of investment options, to protect against unforeseen events, to provide coverage of medical, to so option A, to provide a basket of investment options will be right answer for this particular one. Basic one, ठीक है? तो जो basic question है, I'll speedily cover up those particular one. कोई डाउट होगा तो प्लीज आप अपने डाउट भी लिखिएगा. एंड कल से, हाँ गाइस, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. अच्छा, आर यू गाइस आर अवेलेबल अराउंड 5 और 5:30, ठीक है? थोड़ा बता दीजिएगा 5:30 अगर आप लोग अवेलेबल हैं, ठीक है? सो आई विल कंडक्ट दिस सेशन अराउंड 5 और 5:30, हाँ, ठीक है? So a couple is their 30s and has inherited a large sum of money. Which of the following action would demonstrate effective wealth management? Buying a luxury car, paying off their existing debt, ठीक है? Going on expensive vacation and all. So option B only will be right answer for this one. B will be right answer for this one. अच्छा, okay. I guess you guys are answering for the previous one. ठीक है? What is the primary purpose of life insurance? ठीक है? एंड गाइस, कल का टाइमिंग का थोड़ा सा एक्चुअली इन द इवनिंग, like otherwise like we'll have time from 9 o'clock, but I want to summarize. Actually I have one another session at 8:30 or something, ठीक है? So अगर आपका 5:30 is good ना, 5:30 is good, हाँ बिल्कुल, निशा मैम आपका बोल रही है 5:30 is good. And if अगर चैलेंज है ब्रांच से नहीं पहुंचते हैं अदर्स, तो I'll you can watch in recorded or something, ठीक है? I'll up the events guys, ठीक है? अच्छा, okay. I'll back home at least by, okay, so you drive the through bike or car or bus, ठीक है? ट्रेन, मास्टर जी, चलो, हाँ, क्योंकि अगर हमने 5 बजे शुरू कर दिया तो ये 7:30 बजे खत्म हो जाएगा. I'll let you know in group, okay? चलो, ठीक है, we'll think about this. So to protect against medical expenses, what is the primary purpose of life insurance? To coverage of auto ne, to provide financial support to the family in the event of insured death, ठीक है? So C will be right answer for this particular one. Correct है? Yes, हाँ. Okay. So life insurance जानते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं. Which type of bond the purchaser the right or obligation to convert the bonds into shares of the issuing company? ये हमने आपका IAN IFS में भी पढ़ा है और AFM के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? So what will be our correct answer for this one? It is known as convertible bonds, ठीक है? So convertible bonds which can be converted into equity shares after a certain time duration, ठीक है? So convertible bond is a type of bonds that give the bondholder the option to convert the bonds into a predetermined number of shares of the issuing company. This feature allows the bondholder to take advantages of potential rise in the company's stock price, offering the opportunity for the capital appreciation in addition to fixed interest payments typically associated with this bond. These bonds combine the stability of debt with the potential for equity participation, making them alternative investment for the seeking both safety, growth and liquid also, ठीक है? So liquidity भी इनके लिए एक बहुत बड़ा आपका प्रोविजन बन जाता है. Next one, indirect employ of an investment firm. What is the role of wealth management advisor? तो जो wealth management advisors होते हैं उनका क्या रोल होता है? जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है? तो जो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टर्स या जो कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे उनके जो ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स आपके हैं, ठीक है,
उन पूरे उसको, like it is not about a single service, we are offering all A to Z services which is required to a family as per their financial strength and their financial goal. So आपका that is आपका wealth management, ठीक है. तो manage trust and avail credit option to provide tax planning and estate planning, ठीक है. To offer insurance options, to provide investment strategy advice, ठीक है. Investment firm, what is the role of wealth management? To provide tax planning, available credit options, to manage the trust and available credit options, to offer insurance options, to provide investment strategy. So what we'll go with, I'll go with option B. Aryan is saying option B. Aditya is saying option D. I'm little bit confused between option B and D. So let's see. Okay. To provide investment strategy advice. अब now I'm getting this answer. Why they have? Because I have a thought कि ये क्यों लिखा है आपका? Because this automatically include this things. ठीक है? मतलब investment strategy which will include including tax planning, retirement planning, estate plannings and others. These are auto builds under that particular one. ठीक है. तो जिन्होंने भी आपका आंसर किया था ध्यान रखें. A wealth management advisor primarily provide personalized investment guidelines to help clients manage and grow their wealth. The tailor strategies they tailor strategies based on the client financial goal, risk tolerance, and investment time horizon. By understanding each client unique circumstances, they advise design investment plan that align with long-term objective, ensuring that clients can achieve their financial security and goal itself. Right? Chalo. Next one, guys. A business owner has just sold their company for a substantial amount of money. Which of the following action would be an example of effective wealth management? So, spending money on a new yacht, no. Donating, no. Investing the money in a diverse portfolio of assets, this can be. Using the money to start a new business venture. ठीक है. So, अगर उनका business interest नहीं है, तो C should be right answer for this particular one. ठीक है. So, option C will be right answer for this one. Next one. So, effective wealth management focus on making decisions that may only present but also grow over wealth over the times. Only key strategy in investing proceed is diversified portfolio, which help minimize risk and ensuring long-term financial stability rather than spending luxury items and all this. Next one. Which of the following statement is correct regarding government bonds? बताइए. ये तो सब लोग इसको सही सॉल्व करेंगे. So this is a very basic question. क्या होगा आंसर? So कौन सा statement government bonds के संबंध में सही है? So what will be your correct answer for this one? What will be your right answer, guys? The interest rate applicable on fixed rate government bonds is fixed for the entire 10 years. The lock-in period for such bonds usually 1 to 5 years. Zero coupon bonds are bonds that don't earn interest. हाँ ये सारे ही सही हैं. So like zero coupon bonds, I hope everybody aware about this. So we have two type. One is fixed rate, another one is zero coupon. Most of the time, government they generally come up with this one. Even though these treasury bills also, they are also like government they generally issue those particular bonds on discount. Zero coupon bonds means they get issued on discount basis. ठीक है. तो जो face value है उस पे, like let's say there is a bond whose face value is 1000, ठीक है, and maturity is supposed that 10 years. So government is saying कि you just pay us a discount price of 500 rupees as of now, ठीक है, and we will pay you 1000. So this is discount basis. Another case, face value is 1000 and the coupon rate is suppose that at the rate of 7% per annum for next 10 years, and which is payable on half yearly basis and all this. So that is the one, right? Next one. Which index is usually to determine the inflation link return of inflation indexes bond? I hope you heard about inflation link bonds. So inflation index link bonds आपका, ठीक है. So basically these get issued in the first tranche around 2012 itself, because during the period 2010-11 there was high inflation in the country. So अभी तक का सबसे peak था आपका around 10 point something, ठीक है. तो दिस इज समथिंग लिंक विद योर रियल इनकम कॉन्सेप्ट, कि आपने मतलब आई होप एवरीबडी नो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ना, कि देखो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. लेट्स से हमने एक बॉन्ड में आपका इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज
at the rate of 7% per annum, ठीक है, and the maturity is suppose that 10 years. अब ये आपका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, सो ये जो इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर जो भी अमाउंट आपको मिला, interest was 7%. During these 10 years, ठीक है, what was the actual problem? During these 10 years, average inflation was suppose that 10%, ठीक है, इन 10 सालों का जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो आपका 10% था. दैट मीन्स you gain nothing from this particular investment, you just lost your money, right? कुछ पोर्शन आपका, जैसे the concept of real income, ठीक है, रियल इनकम का कॉन्सेप्ट, how we calculate real income, आपका रियल इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है, सो इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन. तो ये आपका, तो इंटरेस्ट इज हाउ मच 7% एंड इन्फ्लेशन इज 10%. आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, निगेटिव में चला गया बाय 3%, ठीक है. सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कि उनको ऐसी सिचुएशन फेस ना करना पड़े, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, दे लिंक इट विद सीपीआई, ठीक है. उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका, जैसे उन्होंने आपका फॉर्मूला लेके आए मैक्स और जीरो, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. तो जैसे इन्फ्लेशन इज 10% एंड द सीरीज वाज सपोज दैट 2.75%, ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इन एनी सर्कमटेंसेस यू विल मेक दिस गेन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है. अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 5% तो 5 प्लस 10 आपका. अगर इन्फ्लेशन 0 है तो आपका 10. अगर इन्फ्लेशन -2 है तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे आपका 0, ठीक है. सो वी विल कंसीडर इट 0, तो फिर भी आपका इतना परसेंट का रिटर्न क्या होगा, फिक्स होगा. सो दीज वर इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, ठीक है, ILB जिनको हम लोग आपका बोलते हैं. अंडरस्टूड? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है. सो सीपीआई इज द पैरामीटर, जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट इंडेक्स है सीपीआई, तो सीपीआई से लिंक वो सारी चीजें आपकी जो वहां पे की गई, ठीक है. So CPI is used to measure inflation and determine the inflation link return of the inflation index bond. These bonds were structured to offer return based on the changes in CPI, ensuring that investor return keep pace with the inflation. जैसे 2.75 का सीरीज है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़े या घटे वो आपका जो रियल इनकम है उसको आपका गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड कर दिया गया, राइट. चलो नेक्स्ट वन गाइस, द मेन गोल ऑफ प्राइवेट बैंकिंग, ठीक है. तो like we do provide that customized or private banking to our customers, so it is basically for high net worth individuals, ठीक है. तो जहां पे हम लोग उनको कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल सर्विसेज या स्पेशल अटेंशन आपका या वो सारी चीजें आपका दे रहे होते हैं, ठीक है. सो टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू नो टू प्रोटेक्ट एंड इन्वेस्ट एसेट फॉर high net worth individual, it can be the offer retirement planning, the safeguard window. Option B will be right answer for this one, ठीक है, बिल्कुल सही. So private banking is a specialized service designed for high net worth individuals. It offered personalized financial services such as wealth management, investment planning, asset protection. These services are tailored to meet the unique financial need and goal of affluent clients, ensuring customized approach of managing and growing their wealth itself, right? So please do remember this. See, हाँ, ये इमोजीज के साथ कौन खेल रहा है बैठ के आराम से आपका, ठीक है. देयर आर सम पीपल हु इज प्लेइंग विद इमोजीज आल्सो, ठीक है, तो आराम से बैठ के अलग अलग एक्सप्रेशन आपका दे रहे हैं. चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ELSS, ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के संबंध में. दे आर कॉमनली रेफर्ड to as tax saving under section 80C, ठीक है. Investment made in ELSS fund are eligible for tax exemption under 80C. अच्छा, यहाँ पे दूसरा लाइन, ELSS made have mandatory lock-in period of 3 years. अच्छा, ये क्वेश्चन आई गेस हमने पहले डिस्कस भी कर लिया था, ठीक है. I guess we discussed this particular one. Next one, what is the, अच्छा okay, so these are the question, ठीक है. So now you have 3 questions, ठीक है. So these are the 3 questions, ठीक है, and these are the आंसर्स आपका 3 क्वेश्चंस के जो आंसर्स बनाने का सीक्वेंस है, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड आउट विच पेयर इज परफेक्टली मैच विद दीज, राइट. तो पहला, व्हाट इज द रोल ऑफ AMC इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, they generally manage funds on behalf of the investors, ठीक है. So pooling of funds is generally done by them, right? So that is the one. Rohit sir, which one? Rohit sir, which one? Previous one, ठीक है, previous one you are asking. अगर आप पिछले वाले को बोल रहे हैं, सो आई जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन आई गो बैक, ठीक है. अगर ये वाले में ही है तो ये दिस इज योर क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है. दीज आर द 3 क्वेश्चंस, ठीक है.
First one is about AMC. Another one is what is the requirement for an AMC to operate in mutual fund industry, ठीक है? And which regulatory body is responsible for registering and overseeing the asset management company? In these kind of questions, ठीक है? Okay, Rohit sir, I'll come back, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑप्शंस को देख लेना चाहिए. अगर आप ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है? सो इशूइंग करेंसी नोट, नो आरबीआई समझ में आ रहा है. मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स एसेट्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आरबी सेबी एंड कंप्लायंसेस सेबी. हाँ, तो अभी तक एक ये आपका सही लग रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिंग इंश्योरेंस, नो. अच्छा, ये तो इतना आसान ऑप्शन है, खाली क्वेश्चन डराने वाला है. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? ऑप्शन, अच्छा, मुन्ना इज सेइंग ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. हाउ कम ऑप्शन डी? ठीक है, डी क्यों होगा यार? सेटिंग एक्सचेंज रेट. एएमसी का काम क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी हु जनरली डू द पूल ऑफ फंड्स. जो पूलिंग ऑफ फंड्स है, आपका जो फंड्स मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो फंड मैनेजर है वो भी इन्हीं के अंडर आपका काम करता है, ठीक है. सो दिस इज द वन एएमसी आपका, ठीक है. सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर देम, सो उसके हिसाब से ये सारे काम आपके होते हैं. सो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. आर्यन सर मेंशन करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. ओके, एक बार जल्दी से देखिए. आई विल कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है. हाँ, दिस वन हु वाज आस्किंग फॉर दिस? रोहित सर, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईएलएसएस. तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन था, एंड आई गेस वी हैव प्रैक्टिस अ सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईएलएसएस, ठीक है. तो हमने पास्ट में भी ना ईएलएसएस के ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका जो सॉल्व कर लिया था, ठीक है. एनी डाउट प्लीज डू मेंशन, ठीक है. Ramakrishna sir, I hope you getting these particular thing clearly. Okay, if you are facing any challenge, guys, please feel free to ask. Yeah, I'll try my best to answer your queries, right? So AMC asset management companies are responsible for managing assets of mutual. I hope you guys know the entire mutual funds industry working, ठीक है. How basically they work, ठीक है, थोड़ा ऐसे समझ लो. Like they say this is a society, ठीक है. ये आपके these are some investors who wish to invest in market. इनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट दे डू नॉट हैव नॉलेज और दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है, टू ट्रैक देयर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. सो इनकी प्रॉब्लम क्या थी? वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है. जैसे एसबीआई है, या फिर आपका जो आपकी जितनी भी एसोसिएट इन सब्सिडरीज चलते हैं वो सब, ठीक है, एचडीएफसी एंड ऑल, ठीक है. So AMC who will generally what is the role of AMC? Pool of funds, ठीक है, pooling of funds from these investors, ठीक है. They'll collect the money and now this money will come to them. Then AMC, there is a working profile called fund manager. So fund manager will invest this money into equity and debt, ठीक है, as per the scheme type. तो अब यहाँ से जो भी रिटर्न होगा, ठीक है, that return will be distributed among these particular as per their weightage and all. So this is the entire cycle of mutual funds, ठीक है. I hope this things is clear to all of you. Which of the following is correct regarding the elements of investment? ठीक है. So elements of investment is return, risk, safety, liquidity, estate planning. Only safety, no, only return, risk, safety and liquidity, ठीक है. So actually ये question ना थोड़ा सा गलत डिजाइन हुआ है, ठीक है. It should be like whenever we talk about, okay, it is about the investment, okay. If you talk about the like whenever you study the things na, like trinity of risk management, okay. So we have aapka return, we have capital, we have return, and we have that risk, okay. Risk, return and capital. Trinity of risk management in investment is known as आपका capital, risk and return, ठीक है. So आपका higher the risk, higher the return, ठीक है. और अगर जितना रिटर्न होगा उतना ज्यादा कैपिटल आपका लगेगा. कैपिटल मींस दैट कैपिटल चार्ज अगेंस्ट दैट वन, ठीक है. उतना अमाउंट का ज्यादा हम रिस्क वहां पे लेके चल रहे होंगे. इन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस आई विल गो विद ऑप्शन डी, रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, ठीक है. सो दीज शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस वन. हाँ, किसी ने, हाँ, ऑलमोस्ट सभी ने आपका डी बोला है. चलो, सो द की एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टिपिकली इंक्लूड रिटर्न, रिस्क and safety and liquidity, which help investor to assess potential return, the level of risk involved, and the ability to access fund, which is also known as liquidity, right? Estate planning and all, this is not part of this one, right? Next one, which of the following is correct regarding the service offered by
फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक, फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे जनरली ऑफर टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। सो यूजुअली दे इंटरेक्ट विद दी आपका जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज एंड ऑल, ठीक है। सो अंडर राइटिंग इज वन, ठीक है। सो कैपिटल रेजिंग थ्रू आईपीओज, एफपीओज एंड ऑल. Underwriting group work between investors and companies that want to raise or go public via the IPO process. Advisory role for both buyer and seller in business. This is also true. ठीक है. Merger and acquisition process from start to finish. Sales and trading आपका matching up buyers and selling securities in the secondary market. ओनली एडवाइजरी रोल फॉर ओके, अच्छा ये ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हो गए क्या? ओनली एडवाइजरी रोल फॉर बोथ बायर एंड सेलर्स ऑफ बिजनेस, मैनेजिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश एंड सेल्स. ओनली एडवाइस, अच्छा ये क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरा. Okay, just ignore this question. हाँ ठीक है, I'll just cross this question. This question is incomplete, guys. ठीक है, तो इसको ये incomplete इसको छोड़ते हैं. हाँ, so basic यहाँ से explanation पढ़ लेते हैं. Full service investment bank provide a wide range of services including underwriting. ठीक है, आपका advisory role, sale and trades. तो these functions are crucial for the providing comprehensive financial services. ठीक है, next one. Which of the following is correct regarding the organizational structure of an investment bank? ठीक है, तो कोई भी investment bank आपका होता है, so उसके आपके जो offices होते हैं, जो organizational structure होता है, ठीक है. So if you'll see the entire office, so it is divided among three parts. ठीक है, तीन parts में आपका front office, ठीक है, पहला आपका फ्रंट, दूसरा आपका मिड ऑफिस, तीसरा आपका बैक ऑफिस. ठीक है, जनरली आपका फ्रंट ऑफिस आपका जो कहीं ना कहीं डील एग्जीक्यूशन इन अदर्स इनमें, ठीक है. मिड ऑफिस इज जनरली नोन फॉर एमआईएस मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड बैक ऑफिस इज जनरली नोन फॉर सेटलमेंट्स एंड अदर बुक कीपिंग और रिकंसिलेशन थिंग्स. ठीक है, सो फ्रंट ऑफिस, द रेवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक जनरेट बाय द फ्रंट ऑफिस. Middle office, the main function of middle office is to ensure that investment bank does not engage in activities that can be detrimental to the bank health. That means the risk management MIS things they generally done in this. Back office provides supporting activities like operation and all. ठीक है, so ये सारे ही सही हैं आपका. So D will be right answer for this particular one. Next, front office, mid office and back office. Next one. Which of the following are example of alternative investment? Which of the following are in examples of alternative investment? ठीक है, so we have traditional investment or core investment. Usually they are in term of electronic forms nowadays, ठीक है, or they are like we have high liquidity on those particular instruments. ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो आपके रहते हैं, एंड अदर साइड आपका जो लेस उसमें रहेंगे. ठीक है, जैसे हमने समझा था ना आपका एंटीक्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स? स्टॉक, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रियल एस्टेट. हाँ, सो नाउ आउट ऑफ दिस व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो इतना, मतलब ऐसा नीड भी तो नहीं आने लगी आप लोगों को अभी से? दिस वाज वेरी इजी वन ना. ठीक है, हमने समझा था ना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आपका शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, these kind of things they generally comes under that one. ठीक है, जहां हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है, इंश्योरेंस एंड ऑल. एंड अल्टरनेटिव इज बेसिकली आपका they are generally not part of our portfolios and all, right? हाँ, अभी आंसर आना शुरू है. So alternative investment refer to investment type of outside traditional assets like stock. Outside traditional asset, these are the traditional one. Real estate and commodities such as gold, oil, agriculture product, आपका antiques and all are classic example of alternative. These type of asset can offer diversification benefit and often use different risk return profiles compared to traditional investment. ठीक है, next one guys. In the context of mutual funds, which type of scheme have has a specified lock-in period and may cater to retirement or children's investment needs? बताओ कौन सा होगा इसमें से आपका. ठीक है, तो the scheme which has a specific lock-in period
आपका may cater to retire or like for retirement planning or children's planning. ठीक है. So what will be your correct answer? Equity, hybrid or solution oriented. So what will be your correct answer? Quickly. ठीक है. So on the basis of scheme we have closed-ended, open-ended, and basis of plan we have like आपका equity where 100% investment made into equities or shares, and debt mutual funds where we generally made maximum investment in debt funds. Hybrid is basically a combination of equity and debt जहाँ पे शेयर और बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है. ठीक है. This is an example of solution oriented funds, right? So solution oriented funds means what will be, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है. So option D will be right answer for this particular one. Very good guys. So solution oriented funds are mutual funds product designed to help investors achieve specific financial goals such as retirement or children's education. These schemes often come up with a lock-in period to promote long-term investments and ensure that funds remain invested until the goal is met. Examples आपका retirement funds, children investment funds and all, they are generally part of this one. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं. Assessment ही है तो ये bonus question है, जल्दी से आंसर करो. ठीक है. What will be your correct answer guys? And guys कल और परसों, ठीक है, 2 days we'll have marathon session. ठीक है, from all the 5 modules. ठीक है. So पूरे 5 मॉड्यूल को हम लोग कवर करेंगे 2 दिन में आपका. ठीक है. I'll come up with now exam level question, exact exam level question. ठीक है. So I'll work very hard for those particular question. So I need your participation also. तो सभी लोग जुड़िएगा and I'll try my best. ठीक है. तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है. सो असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स एंड ऑल टैक्सेस आर पेड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021, व्हाट इज द इनकम थ्रेशोल्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया? कितना था आपका? ठीक है. सो दैट देयर आर टू थिंग्स. वन इज 182 days एंड आपका जो 60 days इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हमने ये सब पढ़ा था. दूसरा क्लॉज वाज अबाउट द अमाउंट, कि अगर वो किसी दूसरी कंट्री में आपका टैक्स पे नहीं कर रहा है और यहाँ पे उसकी इनकम इज 10, तो ही स्टिल कंसिडर एज सिटीजन ऑफ इंडिया. द अमाउंट वाज 15 lakhs, right? So 15 lakhs will be right answer for this particular one. ठीक है. So as per the amendment effective from the financial year 2010, individual whose income is exceed 15 lakh and who has stay in India for 180 days or more are in preceding years considered residents in tax purpose. However, the threshold is 10 lakh. एक और लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. However, the threshold is 10 lakh is relevant for certain conditions, particularly concerning the determination of tax residency in a specific case also. ठीक है. So please go through this particular line. Next one. Dash is the maximum deduction that can be claimed for interest paid on home loans under section 24. ठीक है. Under section 24. So maximum deduction that can be claimed for interest paid at on home loans. ठीक है. कितना है अमाउंट आपका बताओ जरा. What is the amount in this particular case guys? Quickly. ठीक है. ये हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं with the help of those statement based questions and all. So I'm expecting कि now you will be able to answer these particular questions. ठीक है. So 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh and 2,50,000. So 2 lakh will be right answer for this particular question. Very good. Who marked this one? C. Very good. Nice. So under section 24 subsection B, the Income Tax Act, an individual can claim deduction up to 2 lakh per year on the interest paid on the home loans for self-occupied property. This deduction is applicable for both new and existing loan. If the property is let out and deduction is not limited to 2 lakh rupees and can be claimed without this ceiling subject to a certain conditions also, right? Next one. What is the maximum amount that can be deducted as interest paid on section 80EE? section 80EE. ठीक है. तो कितना है आपका इसका लिमिट? सेक्शन 80EE 50,000. ठीक है. सो 60 सेक्शन 80EE 50,000 आपका. ठीक है. शुड बी हाउ मच आपका? 50,000. ठीक है. ध्यान से पढ़िए दोबारा से. ठीक है. सेक्शन 80EE डिडक्शन फॉर होम लोन इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम होम बायर्स. ठीक है.
Under Section 80E of the Income Tax Act, a deduction of up to 50,000 can be claimed on the interest paid on home loan. The deduction is available exclusively for first-time home buyers, subject to specific conditions, and can be claimed in addition to the deduction under Section 24B. ठीक है, तो 24B आपका 2 लाख रुपीस प्लस आपका यहाँ पे एडिशनल आपका, इफ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर सो यू कैन क्लेम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन ऑल्सो. ठीक है, तो वहां पे आपका कितना था इन दैट पर्टिकुलर क्लॉज, इट वाज 2 लाख एंड 2 लाख प्लस आपका एडिशनल ये. ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेक्शन 80 अप्लाई टू लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वो घर उसने खरीदने मतलब रहने के लिए लिया है, नॉट फॉर द आपका कमर्शियल पर्पज एंड ऑल. ठीक है, द लोन पर्पज शुड बी दिस, राइट. नेक्स्ट वन, under which section of income tax act exemption is available for on the sale of long term asset other than house property. ठीक है, under which section of the income tax act exemption is available on the sale of long term asset other than house property. ठीक है, it is other than house property. तो ये जो 3 sections थे ना इसमें से हमने पढ़े थे. ठीक है, so what should be your answer? आपका क्या होगा आंसर? और सेक्शन एच आपका करेक्ट होना चाहिए इसमें 54H. व्हाट यू सजेस्ट गाइस? क्विकली ये हमने पढ़े थे ना सारे सेक्शन आपका. ठीक है, सो सेक्शन 54F वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट वन. ठीक है, अच्छा ओके, एक बार दोनों सारे सेक्शंस को देख लेते हैं. ठीक है, सो सेक्शन 45F टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी. किसी ने आंसर किया था इसका? नहीं किया था किसी ने. हाँ, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. ठीक है, please do remember this one. Section 54F provide a tax exemption on long-term capital gain arising from the sale of any long-term asset other than house property, provided by the proceed and proceed are used to purchase a new residential property. ठीक है, हमने कोई और मतलब आपका लॉन्ग टर्म एसेट सेल किया अदर देन हाउस प्रॉपर्टी एंड वी परचेज दिस पर्टिकुलर वन, तो आपका उसके डिडक्शन के लिए टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जेम्पशन द एंटायर सेल प्रोसीड must be reinvested in the purchase or construction of new property subject to certain condition as well, right? So please do remember this one. Very good guys, nice. Disha ma'am is also there. ठीक है, very good evening Disha ma'am. So Disha ma'am आपका ज्वाइन किए हैं हमको guys, और दिशा मैम ने आपके लिए जो फाउंडेशन था वो सबसे पहले रेडी कर लिया था. चलो, तो दिशा मैम का एक बार जल्दी धमाकेदार स्वागत कर दो सभी लोग. सेक्शन आपका 54EC, हाँ ये एक्चुअली सेक्शन वाला सेक्शन ना दिशा मैम का ही है, तो वो पूरा लॉ पढ़ाती हैं. ठीक है, सो एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन री इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स. So section 54C of the Income Tax Act 1961 provide an exemption from capital gain tax if the long-term capital gain are reinvested in specific investment instruments within a predefined time frames. Usually it is I guess 6 months. This provision encourages investment into certain bonds to avail the tax exemptions. Section 54Z capital gain tax relief on transfer of asset. So offer tax relief to taxpayers who face capital gain tax upon the transfer of asset. This relief is provided under a certain condition, helping taxpayer to reduce or avoid the tax liability on capital gain arising from the transfer of asset in specific situation. Okay, तो ये आपका थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है तो इसको अच्छे से देखिएगा. ठीक है, और बिलीव मी गाइस, जो आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए रिक्वायर्ड होगा ना उसके हिसाब से इन एक्सप्लेनेशन को रखा गया. तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लाइक दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट इज वेरी मस्ट. आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके लिए एग्जाम में थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. डैश इज द लॉक इन पीरियड फॉर अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. लॉक इन पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कितने साल का होता है? 5 years. व्हाट यू से, व्हाट यू सजेस्ट गाइस? क्या सजेस्ट करते हैं? 5 साल. आई विल गो विद 5 years. हाउ मेनी years? एवरीवन. Okay, so everyone is saying option C will be right answer for this one. 5 years. ठीक है. What is the maximum tax saving interest that can be earned through NSC under section 80C? ठीक है, so this is very simple one, right? So what will be our correct answer? Section 1.5 lakh rupees will be right answer. It is common for all, right? Not only for NSC, even for like PPF and others. आपका insurance and all. So it is 1.5 lakh. Next one. You are a business owner who is considering purchase a new equipments for your business. What is the most effective
टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटीज। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? फाइनेंस द परचेज थ्रू अ लोन टू मैक्सिमाइज योर डिडक्शंस, ठीक है। Delay the purchase until the end of the tax year to maximize your deduction. Use section 179 deduction to deduct the entire cost of the equipments in the year of purchase, ठीक है। Don't report the purchase, नहीं ये तो कभी नहीं करेंगे आपका, ठीक है। The best suitable will be option C. Uses of section 179 will help you a lot. कैसे? Section 179 of IRS tax code allow business to deduct the full cost of qualifying equipment purchased during tax years rather than depreciating it over the several years. This provision can be an effective strategy to reduce taxable income and lower the overall tax liability in the year the equipment is purchased, while option A and B and others are the other one. Okay, so please do remember this one, kind of static in nature. Dash is associated with risk in investment. Dash is associated with risk in investment. Fluctuations in return due to capital नहीं gain नहीं होगा, ठीक है। Fluctuation in return due to capital loss it can be, ठीक है। Consistency in return no, consistent no. So option B should be right answer for this one. क्या कहते हैं बताइए जी? तो ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर, यस हाँ ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कैन बी डिफाइंड, चलो बताओ कॉर्पोरेट टैक्स आपका क्या होगा? अ टैक्स चार्ज ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनीज थ्रू देयर बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है पहला ही आपका सही है। अ टैक्स इम्पोज ऑन सेल नो, अ टैक्स हाँ, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, what is the role of depository participants play in depository services, ठीक है। So depository participants, they are talking about participants, ठीक है। We have depositories, ठीक है। So we have two depositories in the country, NSDL and CDSL, ठीक है। So one is for NSE, another one is for BSE. तो इन आपका two depositories are there, and under these two depositories we have number of depository participants like your bank also, ठीक है। तो ये आप अब depositories का काम क्या होता है? That demat things is generally managed by depositories itself, ठीक है। तो जो भी आपके investors के जो records आपके हैं किसके पास कितना होल्डिंग है इन अदर्स, these kind of things are generally managed by them. Directly engage with the depository to all related services to provide depository services to investors and manage physical certificates to assist the transfer of securities between bank, to offer depository services to investors and serve as in I'll go with option D. What do you suggest guys? Yes हाँ, कुछ लोग A बोल रहे हैं आपका, I'll go with option D. Yes हाँ, देखो क्या, to offer depository services to investors and serve as intermediary between these two आपका कस्टमर, ठीक है। तो ये आपका जो इनका रोल रहेगा, यस हाँ, ये कौन है आपका ब्रोकन एक्स, हाँ जो भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एसेट दैट क्वालिफाई फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका तो क्या होगा? अब देखो, अब ऐसा अगर चॉइस मिलेगा 12 मंथ्स और लेस, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर एन एसेट क्वालिफाई फॉर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अब इसमें ना कोई भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। सो 12 मंथ्स एंड लेस इन केस ऑफ सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स, 12 months or less in case of immovable property and 36 month or less in case of आपका movable property, ठीक है। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं इसके लिए? anyone guys who try wish to answer? C, हाँ देखो C is the maximum bandwidth, हाँ बिल्कुल सही। broken X आपने ये जो लिखा है ना, I also had the same thought process कि like अगर हम तीनों का ही वो देखते हैं तो this is the max case जो हमें मिलेगा। An asset is short-term capital asset if the held for before this one, however the immovable properties holding this one and all, so that is the 24 months, ठीक है। And even in case of securities it is this one, but it is like that question was incomplete, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा लाइन डालेंगे तब वो हम उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। So that is the one। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about power of attorney are correct, ठीक है। So power of attorney साइन की जाती है, ठीक है। बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट में आपका व्हेन एज अ इन्वेस्टर वी गिव आवर राइट्स टू द एएमसी और दैट फंड मैनेजर कि आप हमारे बिहाफ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट बाय सेल कर सकते हो, एंड दैट वाज द वन, राइट। सो दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी।
सो अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज, हाँ पिछले क्वेश्चन में सभी लोग सही हैं जिन्होंने ए बी सी लिखा है, बट डू रिमेंबर दैट थिंग्स, ठीक है, जो तीनों के क्वालिफिकेशंस हैं, एंड दैट क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट एक्चुअली, ठीक है. So a power of attorney is a written authorization given to another person to act on behalf of the person who grant this. ठीक है. A power of attorney is created for a specific task is known as special power of attorney. A power of attorney can be granted to more than one individual. ठीक है. तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर आपका, वन, ओनली वन आपका या ऑल, ठीक है. आई विल गो विद ओनली वन आपका, ठीक है. सो आई गेस पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी लिमिटेड टू अ सिंगल पर्सन और ऑल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है. हाँ, आई विल चेक दिस वन. अच्छा, ओके, ऑल आपका इसका करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस. हाँ, दोज हु मार्क दी ऑल आपका, दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है. सो मुझे लाइक दिस थर्ड लाइन इज the power of attorney can be granted to more than one individual also, ठीक है. So please do remember this. So power of attorney is a written authorization give another person, allowing them to act on behalf of the person who executed the POA. A special power of attorney is executed for a specific purpose or act. A general power of attorney, मतलब special आपका दूसरा journal, ठीक है. A general power of attorney is executed to represent the person in general matters or perform multiple acts. A power of attorney can be executed in favor of more than one person, enabling them to act together or separately as specified. If a POA is executed in a foreign country, it must be stamped with within 3 months of being received in India for it to be availed, ठीक है, to be valid, ठीक है. So please do remember these one and do revise these one, ठीक है. चलो, तो मॉड्यूल डी इज ओवर नाउ, ठीक है. सो नाउ वी डन विद मॉड्यूल डी. सो अब हमारा जो अगला पार्ट है, द फाइनल वन, ठीक है. द फाइनल वन इज मॉड्यूल आपका ई. सो दैट इज ऑल्सो ई, मतलब हम इसको ई क्यों बोलते हैं, इट इज एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स, ठीक है. सो दिशा मैम ने आज ही इस पे आपका सेशन किया है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट और जो केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका दैट इज ऑलरेडी डन बाय मैम. सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है. तो यहाँ पे आपका लैंडर्स अप्रेजल, देन वी हैव हाउसिंग एंड मॉर्गेज एंड वैल्यूएशंस, ठीक है. तो आज ही खत्म कर लेते हैं इसको, वी डू हैव टाइम, ठीक है. सो सभी लोग आपका अभी कोई ऐसा टेंशन तो नहीं है ना, लाइक इट विल टेक हाफ एन आवर्स और थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो हम इसको आज ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि कल से मैं चाहता हूँ कि कल से हम सिर्फ और सिर्फ आपका रिविजन और आपके जो मॉड्यूल्स मैराथन से मिक्स वाले उस पर काम करें, ठीक है दोस्तों. थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा. चलो, तो स्टार्ट करते हैं आपका विद वेरी फर्स्ट वन, ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंडर्स अप्रेजल प्रोसेस, ठीक है. सो लैंडर्स अप्रेजल प्रोसेस, ठीक है. सो टू अप्रूव ऑल लोन्स रिक्वेस्ट, to verify the information provided by the applicants, to decline loan, to encourage housing loan. So what will be our correct answer? Very simple one and straightforward. To verify the information provided by the applicants in the application form. So lenders appraisal process. Option B will be right answer. Next one. So lenders appraisal process. If you talk about this, the lenders appraisal process is designed to evaluate and verify the information provided by borrowers, including their credit worthiness, income, and other relevant factors. This helps the lender assess the risk and make an informed decision on whether to approve or to decline the loan application. The purpose of this process is not to automatically approve or reject loan, or nor it aim to promoting specific loan type and all, right. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement are correct regarding the appraisal process of home loan, ठीक है. So आपका appraisal process of home loan, ठीक है. तो क्या क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज आपका जो भी हमारे जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं 6 वो, ठीक है. सैलरी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16, ठीक है, फॉर सैलरीड एंड और आईटी स्टेटमेंट्स ऑर्डर दिस, ठीक है. आप लोग लेते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना, यस. हाँ, तो क्या होगा, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन. सो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ट्रू, वेरी गुड, ठीक है. तो एक एक करके देखते हैं. सो ड्यूरिंग द अप्रेजल प्रोसेस ऑफ फॉर होम लोन्स, वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई. So the application process is a standard requirement here. Then proof of identity such as these. Third one is आपका the salary certificate and form 16 for salaried person
and IT assessment order for self-employed are needed to verify the applicant's financial conditions, right? Next one. Why is application form essential in the credit appraisal process for housing loan? ठीक है, ये हर एक लोन में आपका जरूरी हो जाता है वैसे, ठीक है. Together relevant information for evaluating risk and ensuring policy compliance, to assess the value of immovable properties, to verify borrower's current income, to streamline the disbursement of the loan amount. So what will be your correct answer for this one? क्या होगा? Quickly. So option A only will be right answer for this particular question. Understood? बहुत आसान है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. So the application form serve to collect the essential information that lenders need to conduct an initial assessment for the loan exposure. It gather detail about the borrower's financial situation, employment, income, existing obligations, and other relevant factors. This information help the lender assess the risk associated with the loan and determine whether it is aligned with the policy guidelines of bank or not, right? चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following act was passed in 1882 to enable the management of property and finance by a designated attorney, right? तो क्या होगा आपका correct answer? बताइए. Very basic one, ठीक है. So power of attorney, ठीक है. So power of attorney act 1882. So option A only will be right answer for this one, ठीक है. So the power of attorney act 1882 was enacted to establish a legal framework for appointing an attorney to act on behalf of another person in managing their property, finance, and other matters. The act defined the right and responsibilities of attorney and outlines that outline the procedures for executing a power of attorney itself, right? Next one. What is the main objective of appraisal process in loan application? To verify accuracy information provided. हाँ, this is a repeat question, guys. Sorry. Okay, sorry. ये क्या था आपका? अच्छा, ये question repeat नहीं था. हमने यहाँ पे क्या किया आपका? Judgmental हो गया थोड़ा सा ना. तो जल्दी इसको क्वेश्चन को जज कर लिया, ठीक है. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेजल प्रोसेस इन द लोन एप्लीकेशन, ठीक है. अप्रेजल प्रोसेस का है टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, बट उसने मेन पूछा तो क्रेडिट वर्दिनेस इन ऑफ द एप्लीकेंट्स हमने लास्ट में आपका उसमें डिस्कस किया था ना. सो दैट इज द वन, ठीक है. देखो, अप्रेजल पॉलिसी फॉर लोन प्राइमरीली फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ एप्लीकेंट. This involve examining the applicant financial history, repayment capacity, and other relevant factors to assess likelihood on timely loan repayments. While property valuation and eligibility criteria are important, the main objective of the appraisal process is to assess the credit risk associated with the application itself, right? हाँ, तो जल्दीबाजी हमने किया था, otherwise like हाँ, this is the one जहां से हमें पूरा क्लियर कट मिलता है. नेक्स्ट वन. Why it is essential for a lender to have risk asset acceptance criteria in loan approval policy, ठीक है. So risk asset acceptance criteria to maintain consistency in credit standard and borrower selection, to determine the maximum loan amount for each application, to set interest rate for a loan, to identify the geographical areas where home loans will be offered. तो क्या होगा आपका? देखो, रिस्क और इनसे रिलेटेड, हाँ बिल्कुल सही. टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स एंड बोरोवर्स सिलेक्शन, ठीक है. सो RAAC is a set of guidelines that help lenders to maintain consistency in their loan approval process. By having clear criteria, the lender ensure that all loan applications are assessed against the same credit standard, reducing the risk of making poor lending decision. आपका risk asset acceptance criteria help lender to evaluate borrower more consistently and ensure that loan are issued to those who meet predefined risk parameters and all, right? So that is the one. Next one. Which of the following factors are relevant at the pre-sanction stage of home loan? ठीक है,
तो जब हम लोग किसी को आपका होम लोन दे रहे होते हैं तो उसका जो प्री सैंक्शन स्टेज आपका होता है, तो उसमें कौन से फैक्टर्स आपके रहेंगे? So what will be your correct answer? The house or flat should be insured against risk such as fire, uh, riots, earthquake or lightning flood. Okay. दूसरा आपका the moratorium period will be up to 18 months after the first disbursement of the loan or 2 months after the completion of construction project and all. The applicant monthly repayment capacity is assessed in relation to their cash flow. The EMI payment generally start 1 month after the full disbursement of the loan. ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग इसके लिए? आपका हाउस ये फर्स्ट वाला सही है क्या आपका? सो व्हाट विल सजेस्ट गाइस? आई विल नॉट मार्क द आंसर. ओके, हाँ सारे ही सही हैं आपका, ठीक है, एज पर दिस वन. ठीक है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं आपका करेक्ट है. इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, moratorium period and repayment assessment and EMI schedule. Please do go through this particular. हाँ all are correct आपका, maximum ने वही आंसर किया. I was not sure about this first one. चलो, why is it important to discuss the legal position and precautions regarding the certain regarding the creation of mortgage in the context of home loan. ठीक है, so to ensure compliances with legal requirement and protect the lender's position through to determine the loan amounts and interest, to assess the credit worthiness, to establish the repayment terms and schedules. So what will be our correct answer? Option A only will be right answer. Okay. So option A will be only correct answer for this one. Okay. So legal consideration in the creation of mortgage. When creating a mortgage, it is crucial to discuss the legal position and take necessary precautions to ensure that the process compile with the relevant laws and adequacy protect the lender's interest also. कि जैसे आपका property title verifications आपका it is essential to verify that the property title is clear and free from encumbrance, ensuring that the borrowers has full ownership. Then इसी के लिए आपका कर्जई, that कर्जई work for this one only. Legality of the mortgage arrangement, securing lenders right also. So these are some key consideration during that particular process. According to RBI guidelines, हाँ कर्जई आ ही गया आपका. ठीक है, which of the following security interest must applicable NBFC registered with कर्जई? ठीक है, so security interest is immovable property through mortgage by deposited of title deed. A security interest created through a hypothecation of stock and debt. This will be not part of this team. Security interest in intangible assets such as patent and copyright. It's again ये भी नहीं आपका होना चाहिए. ठीक है, securities interest in immovable property through mortgage in this. तो आपका, लेकिन हम अगर ऐसे जाएंगे तो आंसर्स में थोड़ा सा गड़बड़ होगा. चलो देखो क्या होगा करेक्ट आंसर. एनीवन गाइस हु विश टू आंसर दिस क्वेश्चन? आपका डी ओनली 2 and 3. ठीक है, ओनली 2 and 3. ओके, सो वी गॉट सम अनवांटेड गेस्ट आल्सो. ठीक है, दे वांट टू, दे आस्क टू, लाइक ही इज वेरी टाइम ओरिएंटेड ना, तो इसको क्या है कि टाइम चाहिए. ठीक है, जिसका टाइम सोने का हो गया सो नाउ ही विल हियर. चलो सिट देयर, आई विल टेक हाफ एन आवर मोर. राइट, चलो सो आपका प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. हाँ ठीक है, सो दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. हाँ चलो आप यहाँ से पढ़ लेते हैं. आरबीआई गाइडलाइंस मेक इट मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन एनबीएफसीज टू फाइल रिकॉर्ड्स equitable mortgage with the central registry of securitization, asset reconstruction and security interest of India कर्जे. ठीक है, सो कर्जे का रोल तो समझते हैं ना आप लोग. लाइक ये मतलब जो भी आपका जैसे कोई ऐसा मॉर्गेज के अगेंस्ट में लोन होता है, सो एवरी पार्टिसिपेंट दे हैव टू रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बार बार आपका लोन ना जाए, या एक ही सेम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मल्टीपल उसमें आपका लोन ना जाए, दैट इज द वन. ठीक है, ओके. All right, chalo next. The registration requirement include various security interest. So security interest. Okay, just give me 1 minute, huh? Hello. Yes.
सर एक्चुअली okay, so I hope you have gone through this particular one. Okay, please go through this particular one, okay, and revise. According to the provision of Income Tax Act 1961, under which section of the deductions for the interest paid on housing loan allowed, ठीक है, तो कौन सी सेक्शन में आपका होता है? तो आपका सेक्शन 10 एंड क्या है, डिडक्शंस आपका इंटरेस्ट पेड है ना, तो आप ऑप्शन ए होगा. अगर प्रिंसिपल होता है तो 80C भी आपका काम करता है. ठीक है. ओके, गहलोत सर इज सेइंग समथिंग, एक और चार होना चाहिए. अच्छा गहलोत सर, वी मिस दैट कन्वर्सेशन. ठीक है, एक बार आप ना उसको देखिएगा एंड आई ऑल्सो चेक दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, अगर उसमें ऐसा कुछ भी होगा मस्ट नो. चलो, सो अंडर सेक्शन 24B ये हमने अभी आपका डिस्कस किए थे. ठीक है, सो आई अगेन दिस इज द काइंड ऑफ होमवर्क, सो प्लीज डू रिवाइज दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, इनको रिवाइज कीजिएगा गाइस. यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स में भी, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स के अंदर भी. ठीक है, सो प्लीज डू रिवाइज दीज वन. ठीक है, नेक्स्ट वन, under which section of the Income Tax Act the deduction for principal repayment on home loans allowed? Principal, under which section of Income Tax Act deduction for principal repayments of home loan? तो 80C आपका हो जाएगा. ये प्रिंसिपल अमाउंट का बात है. ठीक है, सो 80C आपका विल बी राइट आंसर. और 80C का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होता है अदर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सो वी हैव दीज पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है, सो की डिफरेंसेस भी आपका मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं, तो दिस विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. तो सेक्शन 80C आपका 24B 54 ATU ये सारे आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में मदद करेंगे. ठीक है, ATU का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी आपका वो यहाँ पे नहीं है जनरली. अंडर विच सेक्शन, सॉरी, अंडर सेक्शन 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट? कितना है आपका? 80EE. ठीक है, सो इट इज 50,000. ठीक है, सेकंड आपका जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स आपका जो केस था, फर्स्ट टाइम होम बायर्स वाला. ठीक है, वी डिस्कस दिस वन. Using rule 170, sorry 115, how many years will your investment triple if the annual rate interest is 10%? ये आप लोगों ने पढ़ा है. आपका रूल ऑफ 72 हमने पढ़ा था AFM में. ठीक है, AFM और कहीं तो हमने इसको डिस्कस किया था रूल ऑफ 72. सो रूल ऑफ 72 जनरली आपका कहाँ पे, हाँ AFM के अंदर ही था. ठीक है, तो जहां पर हमारा कि कितना समय लेगा टू डबल आर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्स अमाउंट टू आपका जो भी वाई अमाउंट है. जैसे अगर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड इंटरेस्ट रेट इज सपोज दैट 10%, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डबल आर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख? सो आंसर इज 72 डिवाइड बाई 10, 7.2 ईयर्स. अब अगर हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ 115 आपका, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये जनरली आपका सेम उसमें काम करता है, ये आपका कितने समय में ट्रिपल होगा. ठीक है, उस चीज को. सो हाउ वी जनरली डिसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही. सो हाउ वी जनरली कैलकुलेट दिस वन? सो जैसे वहां पे आपका 72 डिवाइड बाय आपका जो भी इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे क्या होगा 115 डिवाइड बाय आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है, जैसे 10%, तो इट विल टेक 11.5 years. ठीक है, सो इट विल टेक 11.5 years in this particular one. तो ट्रिपल रूल आपका that is justified by this. So 11.5 years, हाँ A only will be right answer for this particular one. ठीक है, हाँ 11 years 6 months that is also like 11.5 years आपका, जिसको हम 0.5 years means आपका 6 month. ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट है ना, करेक्ट है. तो आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, तो सिंपल, जैसे रूल ऑफ 72 हमने डिस्कस किया था वैसे ही ये भी आपका जो काम करता है. ठीक है, चलो वी एंड वी रामाकृष्ण सर, यू आर बिट लेट आई गेस, योर आंसर आर कमिंग लिटिल बिट लेट, राइट. दैट इज आई गेस आपके जो क्वेश्चंस के आंसर मिले थोड़ा सा लेट है. ठीक है, विच मेथड ऑफ लैंड वैल्यूएशन कंसीडर द फ्रंट एज एंड डेप्थ ऑफ प्लॉट? ठीक है, फ्रंट एज एंड डेप्थ ऑफ प्लॉट. ठीक है, तो जहां पे अगर हम लोग, जैसे ये हमारा प्लॉट है. ठीक है, सो अगर हमें आपका इसका ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन करना है,
So we generally do valuation from the road side and others. ये आपका this will be considered as front end and all. So ये method आपका चलता है कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is called belting method आपका, ठीक है. So it is known as belting method, ठीक है. So D will be right answer guys for this one. Option D will be right answer for this one. Please go through this one, ठीक है. बस you want to go out, चलो जाओ. अच्छा ये बैठो. Chalo. So the belting method of land valuation take into account for the frontage, the width of the plot facing to the road or street, the depth, the length of the plot to determine the value of the land. Okay? This method divide the plot into strips or belt. The different depth with each strip valued at a different rate, typically higher for the plot closer to the road and lower as the depth increases. ठीक है, मैंने भी आज ही ये स्टडी आपका किया था, ठीक है, and I found this particular one interesting, ठीक है. So please go through this particular one, right? Next one, which of the following factor contribute to building losing its capital value? ठीक है, I'll highly recommend Disha ma'am did one session like today's last session आपका जो मॉड्यूल ई के ऊपर उन्होंने किया है, ठीक है, एंड उन्होंने काफी टाइम लेके उसको ना हर एक एस्पेक्ट उसका डिफाइन किया, ठीक है. तो जब भी आप लोग फ्री होते हैं आपका 1.75 या 2 की स्पीड में एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. चलो, so which of the following factor contribute to a building losing its capital? wear and tear causes हो सकते हैं, पुराना हो गया, ठीक है. न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ, जैसे होता है ना एक पुराना कंस्ट्रक्शन आज के डेट पर नया कंस्ट्रक्शन, जैसे द लेटेस्ट वन इज MYN समथिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ना जैसे पहले ईंट के घर बनते थे, अब आपका जैसे LNT या अदर्स इनके द्वारा या जैसे प्रेस्टीज इन अदर्स में आप देखोगे, सो दे जनरली सीमेंटेड जो आपके वो मशीन्स के थ्रू होते हैं अदर्स, ठीक है. न्यू बिल्डिंग्स विद इम्प्रूव एम्यूनिटीज, हाँ, तो अब जो नए बिल्डिंग्स हैं वो बन रही, नई सोसाइटीज बन रही विद लॉट्स ऑफ एम्यूनिटीज, सो दैट विल ऑल्सो डिक्रीज योर वैल्यू, ठीक है. हमने कोई पुराना घर बनाया था, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए घर और मजबूत घर अच्छे एरियाज में with better amenities and all, so these will generally decrease the value of our house, ठीक है, in that particular one, ठीक है. हाँ, चलो next one guys, under which method of land valuation is the value determined based on the comparable sales price, comparable sale price of similar agriculture land located nearby. जाओ, खुला है, ठीक है. सो अंडर विच मेथड ऑफ लैंड वैल्यूएशन इज द वैल्यू डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कंपेरेबल सेल प्राइस ऑफ द सिमिलर एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन नियर बाय. तो कौन सा मेथड यहाँ पे होगा आपका? सो इट इज आपका इनकम कैपिटलाइजेशन, सेल्स मेथड, एक्सटर्शन एंड कंपैरेटिव, ठीक है. सो व्हाट शुड बी आंसर फॉर दिस वन? इट इज अ कंपैरेटिव मेथड, ठीक है. सो जैसे आपका अदर जगह और इस जगह का कंपैरिजन के साथ आपका रहेगा, ठीक है. दैट इज रोहित सर, दैट इज नॉट द एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है. द कंपैरेटिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय कंपेयरिंग इट विद similar properties that have been recently sold in the same or similar area. This method particularly useful in valuing agriculture land where the value is derived from sale prices of similar plot of land in a vicinity, ठीक है. I hope this is clear now, right? चलो next, okay, हाँ, so this is it. तो ये guys आपका सारा यूनिट वाइज जो आपका कंक्लूजन था दैट इज डन, ठीक है. सो इट टुक अराउंड 5-6 क्लासेस. आई होप, मतलब देखो सबसे ज्यादा जो फायदा आपको होने वाला है वो इन्हीं सेशन से होने वाला है, मतलब जो हमने यूनिट वाइज वो समरी हो या फिर आपका ये जो आपका MCQs या केस स्टडीज वाला जो पोर्शन है ये हो, ठीक है. तो दिशा मैम की समरी भी ऑलरेडी डन है, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं और यूनिट वाइज जो MCQs हैं वो भी हमने करें. अब नेक्स्ट 2 days विल प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन, ठीक है. तो कल और परसों हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे. आई विल कम अप विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एज आई कैन प्रिपेयर. तो आपका एंड एग्जाम लेवल के टाइप के क्वेश्चंस, और एवरी डे आई विल ट्राई टू कम अप विद 100 एटलीस्ट 100 क्वेश्चन और सेट ऑफ पेपर आपका, जिससे चारों मॉड्यूल से, पांचों मॉड्यूल से, जिससे हम लोग काफी अच्छे ढंग से आपका प्रिपेयर हो सके, ठीक है. हाँ, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, बोथ डे गाइस, ठीक है.
रोहित सर कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट, अगर कोई सेशन मिस हुआ है, मॉड्यूल सी कल हम लोगों ने रिकॉर्डेड किया था, अगर आप लोगों ने मिस किया प्लीज डू वॉच दैट पर्टिकुलर वन। इस बार मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी विल बिकम गेम चेंजर, ठीक है। तो ये आपका होता है ना, भविष्यवाणी होती है, जैसे कल ट्रम्प के लिए मैं देख रहा था दैट यूएस इलेक्शन वाला थिंग, तो वहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं ना, देयर वाज वन क्या बोलते हैं उसको, हिप्पो आपका, जिसके थ्रू वो लोग कराते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चल रहे थे, ठीक है। तो मॉड्यूल सी डू नॉट मिस दैट वन, बिकॉज नाउ डेज बैंकिंग इज मोर टूवर्ड टू मार्केटिंग थिंग्स, ठीक है। आप लोग भी जानते हो आपके ऊपर मार्केटिंग का, क्रॉस सेलिंग का बहुत प्रेशर होता है। सो ये जो एग्जामिनेशन है दैट इज काइंड ऑफ दे हैव अप्लाइड वर्जन, ठीक है। तो वो चीजें ना आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलने वाली हैं। सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू वॉच दोज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो I hope you enjoy this session. I'll see you tomorrow. Tomorrow most probably we'll have session around 5 or 5:30, or otherwise we'll keep the same time, ठीक है। I'll let you know in the group itself, right? चलो ठीक है। हाँ, कृष्णा सर आपका, रामकृष्णन सर is bit late, is still answering the options and all. चलो nice. I hope you enjoy this session, guys. Do share with your friends also. I'll share this particular PDF in the Telegram groups, and do revise the explanation part especially, ठीक है। And I'll see you tomorrow, and I'll let you know about the timing things, okay? So this is it. So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Bye bye. Take care all. Good night. See you tomorrow, guys. Thank you. Good night.